Hello, good evening all. My name is Prakash and I welcome you all to this business loan readiness program. And along with this Zoom link, we have a participants from the Facebook also. So we are live on a Facebook. So before we start, I just want to give you the brief introduction of today's speaker. Today's speaker is Dr. Jyoti Gupte. She has just joined. So Dr. Jyoti Gokte has 35 years of experience as an entrepreneur. She holds a PhD degree in finance and has a served as a director to management institutions. And she also provides support with her expertise in business management, administration, and human resources. So, आज का जो ये सेशन है, this will be in Hindi as well as in English. So first we will go through the entire presentation with Dr. Jyoti Kokte, and after that we will have a 2 minutes session on the funding assessment tool. After that we will have the question answer session. So if you do have any kind of a question, you can put those question in chat box. Otherwise, at the end, when we will conduct the question answer session, at that time you can ask those questions. So let's start with the session. I would like to hand over this to Jyoti Gupta, ma'am. Thank you. Yes, good evening. Just hold on. Can everybody see the screen? Can everybody see the screen? Yes, ma'am, we can. Yes, ma'am. Am I audible? Okay. Yes. Yeah. Today we'll be starting this business loan readiness program. Now, most of you are in businesses. You must be taking loans from the banks or from any financial institutions. But at the same time, you should know that when you are taking the loan, how you can be ready. That is the most important. आपको सब आप पैसा लगने वाला है, so कितना लगने वाला है, वो आपको देखना पड़ता है. So इसके लिए, what is the most important thing that you need to do your business model canvas. वो क्या रहता है business model canvas? उसमें key partners, key activities. This I will take it in detail also. But at the moment, what are the blocks? Like who are the key partners? Which are the key activities? Maybe the production or the service. What are the key resources? What is the value proposition? आपका जो product or service में specifically वो unique selling point क्या है? Then customer relationship, distribution channels, customer segments, cost structure, revenue and benefits, then timeline, risk and pricing. ये जो सब blocks है, if you can fill up everything on a one piece of paper, then it's always better that whenever you want, you can always refer these things. Now in detail, what is this business model canvas? आप जब की पार्टनर्स बोलते हैं, वो क्या वो होते हैं की पार्टनर्स? आपके जो बिजनेस के की पार्टनर्स होते हैं, maybe you are, if you have LLP or you have some directors, those are the key partners. But at the same time, आपके जो suppliers रहते हैं, वो भी आपके partners रहते हैं, because आप उनके साथ कुछ relationship है, उनके साथ कुछ आपका व्यापार होने वाला है, इसीलिए वो पार्टनर ही होते हैं. एट द सेम टाइम वो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं. वो कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, बाकी सारे कुछ एजेंट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये सब आपके सर्विस प्रोवाइडर्स है. एंड अभी पार्टनर्स भी होते हैं. वो कौन से पार्टनर्स होते हैं? इवन कॉम्पिटिटर्स, दे आर ऑल्सो योर पार्टनर्स. द जॉइंट वेंचर्स, बायर सप्लायर रिलेशनशिप, wherever you have your strategic alliance, वो सब partners रहते हैं. So ये अलग आपको सब on a piece of paper आप सब लिख दो before you do any kind of planning as far as the business is concerned.
दूसरा जो होता है वो की एक्टिविटीज, उसमें क्या होता है आपका, मैंने बोला आपको, आपका जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आप जो सर्विस प्रदान करने वाले हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। कभी कभी प्रोडक्शन में भी, सर्विस में भी, आफ्टर सेल सर्विस, और whenever you are distributing your products, that time also you need to give service to your customers. Then key resources, वो की रिसोर्स में क्या होता है, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपकी टीम है, देन फिजिकल रिसोर्सेस लाइक आपका मशीनरी और योर इक्विपमेंट्स, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो क्या होता है आपका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, these all are your resources. Then financial resources, like whenever you are taking any loan और एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम एनीबडी, वो आपका रिसोर्स होता है। एंड एट द सेम टाइम आपको जो टेक्नोलॉजी होते हैं वो भी आपका रिसोर्स होता है। अभी उसके बाद होता है वैल्यू प्रपोजिशन। आप वैल्यू प्रपोजिशन, मैंने जो बोला आपको, यूनिक सेलिंग पॉइंट, आप क्या वैल्यू आपके कस्टमर्स को डिलीवर करना चाहते हैं, आप कस्टमर्स का जो प्रॉब्लम है, कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करने वाले हैं, उनके जो नीड्स है आप पूरी तरह सेटिस्फाई करने वाले हैं या नहीं, नहीं तो और थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये सब वैल्यू प्रपोजिशन है। इसके बाद आता है कस्टमर रिलेशनशिप। आपके जो कस्टमर्स होते हैं उनके साथ आपका जो संबंध है वो कैसे रखने वाले हैं, उनके साथ वैयक्तिक संबंध रखने वाले हैं, या सेल्फ सर्विस देने वाले हैं, या ऑटोमेटेड रहने वाले हैं, ऑनलाइन है, कुछ को क्रिएशन आप और वो ऐसे मिलके कुछ करने वाले हैं, वो सब आपको, आपका जो प्रोडक्ट नहीं तो सर्विस है उसके ऊपर ये सब डिपेंड होता है। देन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होने वाला है, तो B2B है या B2C है, और आपका अभी का चैनल क्या क्या, वो कॉम्पिटिटर्स का क्या है, आप कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, पार्टनर के चैनल्स कोई है क्या, वो सब आपको देखना पड़ता है। देन कस्टमर सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट यानी कौन से कस्टमर्स आपके हैं, आपके छोटे बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स, होम मेकर्स, वर्किंग वीमेन, एंड फॉर हुम यू आर क्रिएटिंग योर वैल्यू। और वो जो सेगमेंट है अभी मास मार्केट है या निश मार्केट है, छोटा उनका कुछ कस्टमर्स के लिए ही थोड़ा होता है, वो बोलते हैं निश मार्केट। देन सेगमेंटेड है या डाइवर्सिफाइड है, ये सब आपको देखना पड़ता है। अभी उसके बाद आपका आता है कॉस्ट स्ट्रक्चर। आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर में आपको जो फिक्स कॉस्ट, नहीं तो वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये सब आपको देखना पड़ता है। और वो कौन से इंपॉर्टेंट कॉस्ट है जो आप इनकर करने वाले हैं। देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स में और वेरिएबल में। वेरिएबल फिक्स यानी क्या, आपका जो कुछ प्रोडक्शन ज्यादा ही हो गया, वो फिक्स्ड जो है वो वैसा ही रहने वाला है। कम हुआ आपका प्रोडक्शन, फिर भी वो फिक्स्ड वाला वैसा ही रहने वाला है। फिर वो वेरिएबल जो है, आप 100 प्रोडक्ट्स करने वाले हैं, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो आप जब आप 200 नहीं तो 300 करेंगे, वो आपका वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाता है। उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यानी क्या, वो प्रोडक्शन करने के लिए वो प्रोडक्ट के ऊपर जो आप खर्चा करने वाले हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट यानी लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और टेलीफोन, ये सब इनडायरेक्ट रहता है। सो एनीवे दोज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन। देन अभी कौन से रिसोर्सेस है जो ज्यादा एक्सपेंसिव है, की एक्टिविटीज कौन से एक्सपेंसिव है, आप कुछ कम कर सकते हैं क्या, वो करने के लिए आपको ये सब कॉस्ट स्ट्रक्चर में सब लिखना पड़ता है। और एट द सेम टाइम आपका कॉस्ट ड्रिवन है या वैल्यू ड्रिवन है। कभी कभी वो मोनोपोली मार्केट रहता है, मोनोपोली प्रोडक्ट रहता है, कभी कभी आप इधर से लेते हैं उधर से देते हैं,
उसमें ज्यादा प्रोडक्ट कॉस्ट ही ज्यादा रहता है, वो आपको देखना पड़ेगा कॉस्ट ड्रिवन है या वैल्यू ड्रिवन है। और अभी आपका रेवेन्यू बोलते हैं तो कस्टमर कितना आपको पैसा देने वाले हैं, और अभी का कॉम्पिटिटर्स जो है उनका प्राइस क्या है, आप आपका रेवेन्यू कैसे आने वाला है, वो सर्विस नहीं तो प्रोडक्ट सेल करके आने वाला है, या कुछ अपना जो सपोज इफ यू हैव अ स्पेस वो यूसेज फीस है, या सपोज इफ देयर इज एनी सब्सक्रिप्शन उसका फीस है, लेंडिंग, लीजिंग, रेंटिंग, लाइसेंसिंग कभी कभी होता है, ब्रोकरेज चार्जेस होता है, एडवर्टाइजिंग चार्जेस, ये सब आपको रेवेन्यू एक नहीं बहुत जगह से भी आ सकता है। सो वो सब आपको उसमें लिखना पड़ता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट दिस वन पेज बिजनेस प्लान। देन अभी आपका हमारे हम सब कोविड में से आए हैं, अभी नाउ यू आर स्टिल एस्टैब्लिशिंग इन दिस न्यू नॉर्मल पोजीशन, अभी थोड़ा सा आपको टाइम मिला नहीं मिला, फिर डोंट jump into the the business, before that आपको थोड़ा सा analysis कर दो, हम आपने whatever business you have done before COVID, how was your business model, and now which business model you are trying to develop, then इसके साथ अभी का इकोसिस्टम और पहले का इकोसिस्टम उसमें थोड़ा सा बदल है, वो क्या बदल है, और हमें आपको भी आपके बिजनेस में क्या बदल करना पड़ेगा, देन इसीलिए वो आपको वो सिनारियो डेवलप करना पड़ेगा, उसमें से थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा आपके बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, अभी नए नए संधि अपॉर्चुनिटीज कौन से आने वाले हैं, और हम कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम कस्टमर्स का वो देख के हम कुछ अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं क्या, किसी से बात कर सकते हैं क्या, then can we do some market survey, get some information, because many times it happens that you also do not know, many times customers also do not know, but many times you need to create an awareness in the customers, and that is how you can find some business opportunities, और वो opportunities होने के बाद आपकी जिम्मेदारी होती है वो सब कस्टमर को सेल करना है, उसके लिए भी थोड़ा सा विजन चाहिए आपको, थोड़ा सा रोड मैप चाहिए, और उसके ऊपर वो आपका प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वो सब आ जाएगा। देन अभी देखो बिजनेस को जो पैसा लगता है वो किसके किसके लिए लगता है, पहला तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगता है, then to buy the building, to buy the machinery, any kind of fixed assets, then आपके जो admin bills, नहीं तो आपके ट्रांसपोर्टर्स, ये सबको पैसा तो देना पड़ता है, देन आपकी जो टीम है, जो वर्कर्स नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर्स, जो उनको पैसा देना पड़ता है, कभी कभी अपना बिजनेस में इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो बाहर दिखता नहीं है, फिर ग्रोथ तो होना चाहिए, वो इंटरनल ग्रोथ के लिए पैसा लगता है, कभी कभी इमरजेंसी आपातकालीन जो कभी कभी संकट आती है वो उसके लिए आपको रखना पड़ता है, और एक्सपैंड बिजनेस करने के लिए भी लगता है, अभी ये सब पैसा लगता है, फिर उसको भी थोड़ा सा पहला बिजनेस प्लान कैनवास करके इसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देके वो करना पड़ेगा, अभी कितना चाहिए, इसके बाद हम थोड़ा सा फंड्स रेज कर सकते हैं क्या, वो सब आपको थोड़ा सा नोट्स लिखना कुछ जरूरत है। अभी बिजनेस साइकिल बोलते हैं, you know what is working capital and fixed capital, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। Suppose if you have an investment and you have taken the loan also, अभी ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जो सेविंग में से आप लेते हैं, नहीं तो आपके फ्रेंड्स नहीं तो रिलेटिव से लेते हैं, वो इन्वेस्टमेंट और लोन ये करके आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है। आप वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट से क्या करते हैं,
आप रॉ मटेरियल लेते हैं, देन यू incur the production expenses, operating cost, cost of finance और आपका खुद का सैलरी. अभी प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं तो उसमें लेबर आता है, प्रोसेस कॉस्ट आता है, एक्सेसरीज आता है. देन ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं वो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए क्या क्या लगता है, एडमिन, अकाउंट्स, मार्केटिंग, देन सेल्स, ह्यूमन रिसोर्सेस एंड मेनी मोर कॉस्ट. अभी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस बोलते हैं, वो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस में क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, डिविडेंड्स, इफ यू हैव प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देन डिविडेंड जाता है, देन टैक्सेस वो जो गवर्नमेंट को देते हैं, और बाकी कुछ कॉस्ट ऑफ फाइनेंस होगा तो वो उसमें आएगा, और आपका खुद का सैलरी, क्यों नहीं तो ड्राइंग्स बोलते हैं वो आपको निकालना पड़ता है. ये सब जो है वो सब मिलके आपका प्रोडक्ट नहीं तो सर्विस वो आपका तैयार हो गया. अभी उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स. और ये फिनिश्ड गुड्स जो है आप क्या करते हैं, कस्टमर्स को सेल करते हैं, और कस्टमर्स आपको पैसा उसका जो सेलिंग प्राइस है वो देते हैं, और वो किधर आता है, अगेन इट कम्स एज वर्किंग कैपिटल. सो ये जो पैसा है वो आपको वर्किंग कैपिटल करके आएगा, और आपका जो पैसा आपने जो खुद ने डाला है वो भी उसमें आएगा. सो दैट मीन्स दैट दिस इज ऑल साइकिल. You know, first is you just have to, you whatever money you get, could you please mute yourself? Thank you. Then बोलते हैं basics जो funding है, what is that funding? What are the funding institutions and which are the loan factors? अभी हम जब बोलते हैं funding, वो फंडिंग क्या रहता है, कभी whenever you are taking this funds from the lender, that means or the banks or something, but वो कैसे होता है, वो पैसा आपको वापस देना पड़ता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, और वो जब आप देते हैं वो इंटरेस्ट के साथ देते हैं. सो इसमें क्या क्या आता है, लेंडर आता है, आप जो कस्टमर जो whoever is taking loan, and the amount which you get, it is for a specific period and at a specific rate of interest. This is what funding you get from the bank. Now what are the types of funding? There are bootstrapping, like आपके जो saving रहता है उसमें से आता है, आपके family, friends, incubators. What are incubators? Like वो जो entrepreneurs है उनके लिए कुछ hand holding करने के लिए कुछ अभी incubation centers आए हैं, वो भी आपको कुछ पैसा सब्सिडी नहीं तो कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स होगा उनके लिए आपको हेल्प करते हैं. Then government schemes, grants, subsidies, financial institutions, banks भी होते हैं. At the same time, non-banking financial corporations होते हैं. हम देखेंगे क्या है वो. और these all are types of funding which we have. And I have not taken into consideration venture capitalist and angel, because these are the known kind of things. I don't want to go into this venture and angel capital. Now, these financial fund institutions, they give you in the form of loans to any individual or any business. Okay, and now अभी ये जो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है उनके पास से हम जब लोन लेते हैं, what are things which you need to consider? First is the margin money. What is the meaning of margin money? आपका जो पैसा है वो जो लगने वाला है from the bank, the bank will not give you 100% loan. आपको भी कुछ डालना पड़ता है. So 15 to 20% margin money you need to put it, and then rest of 85-90% the bank will provide. The second one is the please mute yourself. Please mute. Okay, then the next is duration of the loan. अभी ये duration है अलग अलग रहता है. अभी for small
पीरियड के लिए मिलता है, नहीं तो मीडियम टर्म के लिए मिलता है, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है। वो शॉर्ट टर्म के लिए जो मिलता है उसके ऊपर का इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट वो भी अलग रहता है, उनके टर्म्स कंडीशंस भी अलग रहते हैं। एंड अगेन इट डिपेंड्स, उसका जो पर्पस है वो भी अलग रहता है। सपोज आपको कुछ मशीनरी लेना है, आपको कुछ बिल्डिंग फैक्ट्री इंडस्ट्री का बिल्डिंग लेना है, इसके लिए जो आपको लोन लगने वाला है वो फिक्स्ड वाला रहता है, उसके ऊपर का लोन का जो इंटरेस्ट रहता है वो भी कम रहता है। अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वो भी छोटा कम रहता है, नहीं तो ज्यादा रहता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट विच यू नीड लोन। देन गारंटर, अभी आपको जो कुछ पैसा लेने वाले हैं, सपोज आप वो जो लोन है वो आप नहीं दे पा सकते हैं, वो क्या होगा, उनका बैंक का पैसा वो दैट विल इफ यू डोंट पे उनका एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फिर उसके लिए वो उनको गारंटर की जरूरत रहती है, गारंटर नहीं होते तो आपको लोन नहीं मिलता है। आपके वो जो गारंटर्स है मे बी आपके पेरेंट्स हो, नहीं तो फ्रेंड्स हो, नहीं तो आपके कलीग्स हो, वेल विशर्स हो, वो गारंटर करके उनका सिग्नेचर वो ले सकते हैं। देन कोलैटरल सिक्योरिटी, कोलैटरल सिक्योरिटी मीन्स आपका जो कुछ आप पैसा लेने वाले हैं उसके साथ आपका जो वो असेट है वो उनके यहाँ मॉर्गेज करके रखना पड़ता है। उसमें दो प्रकार होते हैं, एक जो होता है वो कोलैटरल सिक्योरिटी होता है और वो दूसरी होती है वो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है। सपोज इफ यू आर बाइंग मशीनरी, that time the same machinery you can keep as collateral security with the bank, उसको बोलते हैं primary security. And suppose in collateral security, suppose if you need for something else which you cannot keep your asset as a security, so that time you need to keep your fixed deposits or your life insurance or your house, these all you can keep as collateral security. और ये सब करने के लिए आपको कुछ फीस देना पड़ता है, उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फीस। ये सब आपको फैक्टर्स जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं तो बैंक से आप लेते हैं वो सब आपको देखना पड़ता है। अभी जो आपका फंडिंग प्रपोजल है वो करने के टाइम आपको क्या क्या चेकलिस्ट क्या होती है हम देखेंगे। अभी उसके पहले एक ध्यान में रखना, आपका जो बैंक है वो आपको लोन देने के पहले वो देखने वाले हैं आपका कैरेक्टर, यानी आपका क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। लाइक आपने जब किसी किधर से आपने लोन लिया है, आपने वो लोन वापस किया है या नहीं, आपका हिस्ट्री क्या है, आपका इंटरेस्ट, नहीं तो आपने डिले किया है क्या, क्यों डिले किया है, वो देखने वाले हैं। देन मैंने आपको बोला सिक्योरिटीज ऑफ द लोन, प्राइमरी और कोलैटरल सिक्योरिटी। देन आपका जो कैश फ्लो है आपका बिजनेस में जो पैसा आने वाला है जाने वाला है, उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। आपका बिजनेस एक्सपेंसेस कैसे है, आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है और बिजनेस एक्सपेंसेस है वो सब आपका जो सेल प्राइस है, आपका रेवेन्यू है, इसमें से कवर होता है या नहीं, आपका प्रॉफिट है या नहीं, वो सब कैश फ्लो देखने वाले हैं। इसके बाद वो कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, उसमें आपका जो असेट कॉस्ट नहीं तो आपका जो परचेस है वो आपको अपने जो आगे सपोज क्या होता है आपका, सपोज इफ यू आर बाइंग अ पर्टिकुलर एसेट, वो एसेट 1 बरस के बाद भी आप यूज करने वाले हैं,
उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। और आपके जो बाकी का कंडीशंस रहता है, आपका वर्किंग कैपिटल, ऑनगोइंग कॉस्ट, कंपटीशन कैसी है, इंडस्ट्री ट्रेंड्स कैसे है, रेगुलेशंस है क्या कुछ, ये सब आपका कंडीशंस, दैट इज 5 C's: कैरेक्टर, कोलैटरल, कैश फ्लो, कैपिटलाइजेशन एंड कंडीशंस. Or suppose if there is somewhere, if bank is not happy with few C's, then they may refuse to give you the loan also. It all depends on them. Abhi, there are 10 steps to get business loan funding proposal. उसमें आता है पहला बिजनेस प्लान तैयार करना पड़ता है. वो बिजनेस प्लान में सब आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, आपका प्रोडक्ट्स कौन से हैं, आपका मार्केट कैसा है, आपके कॉम्पिटिशन्स कैसे है, और आपका जो पैसा है आप कैसे आप देने वाले वापस देने वाले हैं बैंक को, ये सब आपको प्रोजेक्शंस करके देना पड़ता है. इसीलिए वो सब उसमें जो कुछ कैलकुलेशंस है वो सब वो बिजनेस प्लान में रहता है. देन ऑन दैट बेसिस आपका जो लोन का अमाउंट है वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है. अभी यू नीड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और एंड हाउ मच यू कैन अफोर्ड. Remember one thing, if suppose X amount if you want, see to it that you don't apply for lesser or more loan. Whatever you need, you just have to calculate everything, and plus thoda sa zyada utna hi lena hai. Just because you are getting loan, that doesn't mean that you need to have more loans, because वापस आपको देना पड़ता है, उस इट कॉस्ट. सो वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट. नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रोजेक्शंस. उसमें आपका प्रोजेक्शंस में इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एवरीथिंग विल कम इन दैट. Then gather supporting documents. उसमें supporting documents में क्या आता है, आपका कुछ पैन कार्ड है, then आधार कार्ड, suppose if you have any quotations of your machinery or any orders if you have, वो जो कुछ आपके पास documents है वो सब आपको उनको सबमिट करना पड़ता है. और ये सब मिला के आप एक अच्छा तरह एक इंडेक्सिंग करके एक फाइल कर देना और वो सबमिट कर देना. और ध्यान में रखना, जब आप ये रिपोर्ट और फाइल ये आप करने वाले हैं, उसको वैसा ही, सपोज इफ यू हैव अपॉइंटेड अ कंसल्टेंट फॉर दैट, see to it that you also study this particular project report, because whenever you are submitting this, the bankers, they are going to ask you few questions, and for that आपको वो जो lenders queries है वो resolve करना पड़ता है. Suppose आपको कुछ मालूम नहीं है उनके, वो जो कुछ आपने फाइल सबमिट किया है, तो उनको थोड़ा सा उसमें कुछ questions है, तो थोड़ा सा doubt आता है whether you have done that, whether whether you will be able to do this business or not. Itna doubt aata hai, so that see to it that nothing is kept unattended. Then वो सब queries satisfy होने के बाद आपको वो बैंक से एक sanction letter लेना पड़ता है. वो उसमें कितना पैसा आपको लोन मिलने वाला है, इंटरेस्ट रेट क्या है, देन कितना टाइम के लिए वो आपको मिला है, ये सब एक सैंक्शन लेटर आपको मिलेगा. और बाद में वो उसका एग्जीक्यूशन और साइनिंग ऑफ द लोन डॉक्यूमेंट्स, दैट इज ऑफ नेक्स्ट पॉइंट. एंड देन द वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई टोल्ड यू, द मार्जिन मनी यू नीड टू डिपॉजिट फर्स्ट, एंड वो आपका डिपॉजिट होने के बाद उनका जो लोन अमाउंट है वो आपको क्रेडिट होने वाला है, वो आपको डिसबर्स होने वाला है. This is how the loan process is.
अभी एक ध्यान में रखना क्या क्या आप अवॉइड कर सकते हैं उसमें से. सपोज इफ यू हैव योर डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बिजनेस, डोंट have that confusion in the description of your business, or the vision also has to be very attainable, which you can reach to that vision and the mission. Then unsupported assumptions. Suppose आपके पास कुछ कुछ कोटेशन नहीं तो कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आपने दिया है, फिर उसको कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो उनको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिखाना तो पड़ेगा. Then asking for too much money or too little money. Then use of jargons, avoid that. Use of over used phrases, avoid that. Make it very simple so that they understand. Any Tom, Dick and Harry, they should be in a position to understand what your project is, what your business is, and they are only interested, they are not interested in your presentation, but they are interested whether you can repay their loans or not. That is important. Then you don't never say that there is no competition or anything. It can happen, but how you can overcome the competition, that is what is more important. And the numbers. So many times it happens that in the first year itself, you put the figures like, itna hame, itna lakh hame profit hona hai. It never happens. Never ever put your unrealistic numbers in your project report. अभी जब आप लोन लेने वाले हैं, along with the banks, there is one more avenue it has opened up now, that is called non-banking financial companies. And these NBFCs, these are much friendly to disburse you the loans. They don't have much regulations, but of course they are also regulated by RBI, but not stringent rules they have. It's always easier to get the loans from NBFCs compared to the regular nationalized banks. And these NBFCs are like Shriram Transport Finance Companies or Bajaj Finance, Mahindra and Mahindra, Chola Mandalam. These all are NBFCs which are at the moment in India. So in fact, what is the difference between regular banks and these banks? Because these banks, they don't allow to accept the deposits or the saving bank or something, which normally is in our regular banks. And at the same time, these NBFCs, they cannot issue the checks drawn on themselves. These are the differences between regular banks and these NBFCs. Now, you also get loan from Mudra, which Mudra you can get from any cooperative nationalized banks. They have three categories. One is the Shishu, Kishore, and Tarun. In Shishu, you get up to 50,000. These are basically for startups and first-time entrepreneurs. Then Kishore, 50,000 to 5 lakhs. These are for existing businesses. And Tarun, like 5 to 10 lakhs. These are again for established businesses, and they can use it for their business expansion. And you can see the this Mudra card also, where the bank logo is there and the Mudra card is there. Whenever you need, that time you can, it's like any debit card. So इसमें guarantee, वो पहला जो issue है, उसमें guarantor की जरूरत नहीं रहती है, processing fees भी नहीं रहता है, उनका rate of interest भी कम रहता है. Then ये सब बैंक में, hello, could you please mute yourself? Could you please mute yourself? Then ये सब बैंक में आपको ये मुद्रा लोन अवेलेबल होगा.
Then there is one more, that is Prime Minister's Employment Generation Program. In that also you get Rozgar Srijan loan. And those all are, the information is available on their websites. Then suppose if you need any MSME loans, that is also available, like Pradhan Mantri Mudra Yojana, then MSME business loans, then SIDB, soft loan, credit guarantee, trust fund, Stand Up India, bank credit facilitation scheme, then PMECG. And these all are the loans which are available. Again, those are also available in your Udyam Mitra portal. And in this also the same thing happens, like loan amount, collateral, repayment, flexible repayment system options. Then there's a less paperwork, hassle-free process. Which are the loan types? Like term loan is normally required for fixed capital, equipments or machinery if you're buying. Then working capital is basically for day-to-day expenses. Working capital is required. Then equipment finance and loans under government schemes. There are few subsidies or grants have been given for these MSME people. Then there's a fast approval, quick dispersal, and a rate of interest. It again varies from bank to bank. This is all as far as this MSME loans are concerned. Then this is very important. Keep this in, listen this very carefully. Whenever you want any kind of loan, the most important is what credit worthiness you have. They are going to see your credit score. And ye jo credit score hai, it has to be more. Suppose there are two types of credit score. One is the individual and the second one is the business score. वो individual है उसका, I'll tell you what it is, but the most important is the credit worthiness. Unless your credit score is positive, you're not going to get the loans. Suppose if you were unaware of credit score till today, but tomorrow what can I do? Whether am I not going to get loan anytime in my lifetime? No, it's not like that. You can improve your credit score also, but how to improve that? I will tell you what it is. Then credit worthiness refers to the way a lender determines how worthy you are to receive the new credit or the new loan. It is based upon the factors such as how is your history of repayment and the credit score. Now this is the CIBIL, CRISIL, SMEDA, CARE. These all are the agencies who are establishing these credit scores. Now in this credit score, the range is between 300 to 900. Your credit score at least has to be 750. And if it is below that, like 300, 400 or something, you're not going to get the loan. Higher the score, higher the chances of loan approval. And exactly it is opposite in business credit score. In this, the range is between 1 to 10. But the measures of credit worthiness, it is for the businesses. Lower the rank, higher the chances of loan approval. And now suppose if your credit score is not good, then how you can improve your credit score? The first is build up your credit history. Now you just have to find out आपके नाम के ऊपर कौन से loans हैं. अभी जो आप credit card आप use कर रहे हैं, that credit card is also like a one type of loan only, because you are buying your product by submitting your credit card, but maybe for a month or so. But at the same time, if you are not in a position to repay that money whenever you get the bill, that means that you are spoiling your credit score. Remember that.
सो आपको जो क्रेडिट स्कोर है वो आपके जो प्रीवियस डेट्स है, आपका क्रेडिट हिस्ट्री है, आपका क्रेडिट कार्ड है, ये सब के ऊपर आपका डिपेंड होता है. Suppose if there is any mistake, then that time you need to gather all the documents to submit them. Line up all the references. Suppose you can always tell them that this is whatever you have done. These all are the documents which I have as a proof, and accordingly they can rework on your credit score. Then improve your personal credit score, your business credit score, whatever it is, and pay down all the debts. That is important. And that also will take at least 3 to 6 months to improve your credit score. So right from day one, you need to be very careful. Just because you have access to your credit card or access to your loans, because there are so many telephones are coming on your mobile. Do you need personal loan? Because sometimes we get tempted, but never ever fall for that. So if you need, you can. Otherwise, whatever is required, only up to that level. And if you can recover that money, or you can pay down those debts, then only you have to take the loan. Otherwise, please do not take. Don't have those temptations. Now the next is the establish your business identity. वो business identity कैसा establish होता है? आपके जो registrations और licenses जो लगता है, उसके ऊपर आपका business identity establish होता है. उसमें क्या क्या रहता है? आपका what type of company you have, then whether you are MSME, उद्यम registration कुछ जरूरत है आपको, GST registration जरूरत है, नहीं तो आपको स्पेसिफिक कुछ लाइसेंस लगने वाला है, FSSI और समथिंग लाइक दैट. देन आपका जो पर्सनल KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस एड्रेस प्रूफ, देन आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब है जो है, that establishes your business identity. Now suppose constitution of business. Abhi there are two types. One is a single owner, the second one is a multiple owner. Now whatever the business, suppose if you are in the existing business, आपको कौन सा आपका business होगा. आपका either proprietary होगा, नहीं तो OPC, one person company, or partnership, regular partnership, or limited liability partnership, then private limited company, इसमें से कुछ होगा. और सिंगल ओनर में सिर्फ प्रोप्राइटरी और वन पर्सन कंपनी आता है, और बाकी के सबको मल्टीपल ओनर्स आते हैं. और ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंपनी has different advantages and disadvantages. Again, it depends what type of business you have and your expansion plans. That is important. Then now this revised MSME definition. अभी आपका जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो माइक्रो में अप टू 1 करोड़, स्मॉल अप टू 10 करोड़ एंड मीडियम अप टू 50 करोड़. और आपका जो टर्नओवर होगा वो माइक्रो में 5, स्मॉल में 50 और मीडियम में 250 करोड़. इतना होता है. तो अकॉर्डिंगली आपका माइक्रो लेवल इंडस्ट्री है या स्मॉल है या मीडियम है, वो देखना पड़ता है. नॉट नेसेसरली यू नीड टू हैव दिस. You can if you are the beginner, you can't be MSME, of course. You can start right from, suppose if you have a small company, maybe there are few said that bakery, or maybe some are in textile or the tailoring or some kind of businesses. You can't be MSME, of course, but you need to start right from on a smaller scale, and accordingly maybe in 5-10 years you can always reach to this level, but always the beginning has to be small.
Then Udyam registration if it is required, because it is not mandatory. But MSME certification, loan or government subsidy, if you are going to get, then only Udyam is mandatory. Then this GST registration. This is also not mandatory. Suppose if you are manufacturing any product and your turnover is up to 40 lakhs, then it is mandatory. And the services like consultancy or any other kind of services, that is 20 lakhs. And the GST audit is also required, but that is more than 2 crores. But if you are starting any business, and don't get scared that, oh my God, then there is a GST registration I need to require, not required. But suppose if you are going to, sell your product, maybe through e-commerce, then that is compulsory, maybe through Amazon or maybe through any other e-commerce sites, then that is GST is mandatory. Then there are specific licenses. Of course, Shop Act is required for each and every, because there are employees or workers, contract workers are also there. So for them, Shop Act is required. They regulate, this Shop Act regulates the work conditions and the workers' rights. That is why Shop Act is required. And it is mandatory for all small businesses. Suppose if you are in any business which is related to food, then this FSSAI registration is required. That is Food Safety Standards Authority of India. It is basically autonomous body under Government of India. And even small, suppose vada pav, this thing also, but you need that FSSAI registration, and that is not very difficult to get this license. And suppose if you are exporting, importing something, then this IEC code, that is Import Export Code, is required. So these are specific licenses which you, and once you have that, simultaneously you can start doing your businesses. Don't get scared that this is what I need to do, and that is why it's difficult to do your business. These all are mandatory. In fact, government also needs some kind of records for these things, whoever are doing the businesses and in which sector, and accordingly the statistics also depending on that. So these few things which you need to comply. Then this is how these licenses look like, Shop Act or FSI. Then there are a few compliances which you need to do. Suppose if you have employees less than 10, and if you have more than 10 employees, you need to have employee state insurance, then provident fund, then gratuity, and every monthly or yearly you need to do the compliances. And suppose if you want to renew Shop Act, it will be maybe after 3 years or 5 years, this renewal is required, not every year. Then very important, if suppose if you are doing the business, then you might as well respect all these business compliances to basically to run your business smoothly. You can avoid your penalties, your legal actions, stoppages of business. And many times it happens that just because you have not fulfilled your compliances, even the customers also, if they come to know, you lose the confidence in customers' minds. So to generate that confidence, fulfilling these compliances are also required. Then this is KYC, like PAN card, Aadhaar card, address proof. For proprietary, you need your own PAN card. Suppose if you have a partnership, you need to have PAN card for partnership firm. And the same thing with Aadhaar card also.
As I've already told you, this intellectual property, these are like trademark, copyright, patent. In one word, I'll tell you what trademark is. Normally for your logo, for your symbol, your letters, words, colors, whichever you are using in that, for that you, so that others cannot copy, that is like your own, different identity altogether. That is why you need to register your trademark. Then copyright. What does that copyright means? That the rights that creators have their literary or artistic works, like your books, music, paintings, films, they have the copyright. And the patent, wherever there is a major invention, so that you cannot commercially use, others cannot commercially use your invention. So that, you know, there need to be the owner's consent for that. That is what is called patented. So trademark, copyright, and patents. Now, the next point is, after this establishing your business identity, the next point comes as financial formalization of your business. In that, it comes the books of accounts. You need to open your current account, and you need to submit your income tax returns. Now, bank books of accounts, maintaining books of accounts is very important for your own purpose, but the, and this government has given you presumptive taxation under 44 AD income tax, and they have given you the exemption up to turnover of 2 crores for your products. And if suppose if you are a professional, the exemption is up to 50 lakhs. You can opt to be taxed presumptively, because you can declare your 8% of your non-digital transaction and 6% of your digital transaction. What does that mean? Suppose if you are doing your business up to 2 crores, you need not do your, you need not write your accounts, so that you cannot, only for your purpose, of course, you can keep all the accounts, but audit is not required. And at the same time, how can they how can they see whether you are taxable or not? They will see your income, and that 8% of your income they will take as your income. Suppose on 2 crores, 8 lakhs, that comes to X amount, so that they will take as your income. And if you are digital, like UPI or internet or something, they will take only 6% of your, from your digital transactions. Again, that is a special concession which is given to encourage these digital transactions. Whichever is applicable, you can do that. So no need, in fact, for any employment, there is 3 lakhs of, to, the income tax payable is, up to 3 crores, or, 10%, 20%, 30%, and plus whatever your additional this thing is. But in your business, you get all kinds of, these concessions. Whenever you have your business, you need to open your current account. Suppose if you are doing with your name, then in proprietary, your saving account is okay, but normally current account is open. And for income tax returns, you need to file your returns annually with all these information, whatever is required. And eventually, I suggest you all, you start filing the returns on your own. Learn that, and you will know exactly. It's very easy. You can file your own income tax returns. And when you do on your own, you know exactly all small things. You will be able to understand the intricacies of it.
Then digitization of business. In the digitization, there is a online banking is there. You can do your fund management. You can transfer money to others as well as to your own account. You can, your auto debits also can be done. Your money market, stock market also can be managed from your um, computer, internet banking. Everything is possible. Only the thing is account security. It's a major point which you need to be careful about. And in this in digitization, as you already know, it is the importance is and the benefits are huge. You need not, the your transactions, whatever your X amount, suppose if your limit is there, up to that level, you can always debit or credit the amounts. Suppose if you need to, increase your whatever your limit is, you can request your bank and they can increase your limits also. Then this nifty NEFT, then RTGS, IMPS, these all you must be doing on your own. So these are also very convenient. And this GPay, Paytm, these all IPI, Unified Payment Interface. This is all what is called the digitization in banking. This is what it is. And if you have any queries as far as this business loans are concerned, those are welcome. Thank you. Thank you, madam. Hello. Hello. Okay. Thank you, ma'am. Now I will share my screen and I will show the funding readiness assessment tool. It will take only 2 minutes. We just have to. Prakash, your voice. Am I audible now? Is it okay now? Yes, Yes. yes, yes, yes. This particular tool, you can do the funding readiness. Prakash, your voice. Hello, I'm going to. Yeah. No. Okay, so in this, the business idea is. Your voice is not clear, Prakash. Just a minute. Is it okay now? No. Hello, is it okay? No, Prakash. Just give me a minute. So can we have some questions? Yeah, in the meantime, we can. Okay, so it was a very nice session and all the details were definitely covered. So I also wanted to ask if you can give any guidance on funding for equity or debt base from private investors. आम्ही दे आश्रममधून त्याच्यासाठी नाही करत. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Hello, am I audible now? Yes, you are.
Okay, so we are at this stage, my business idea. So यहाँ आपको आपका नाम लिखना है, सॉरी आपके बिजनेस का नाम लिखना है. Let's say if we write ABC bookstore, प्रकाश then स्क्रीन शेयर कर. स्क्रीन शेयर करें. now it is visible. Yes. So ABC bookstore we have to write. Then years in operation, less than 2 years, or if it is more than 2 years, select this option. You have to click on next. जैसे आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सेशन में ये जो क्वेश्चंस सुने होंगे, और मैम ने प्रेजेंटेशन में कुछ बातें बताई थी रिगार्डिंग योर रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, योर केवाईसी डॉक्यूमेंट, क्वेश्चंस इसी पर्टिकुलर टूल में है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू हैव your personal KYC document such as a PAN card, Aadhaar card, or address proof? If it is there, you can say yes. If it is not there, you can choose the option no. Do you have a PAN card for your business? Now, this is particularly for other than proprietorship concern. Suppose if it is your if your entity is proprietorship, then you can choose this option. I have a proprietorship concern. Otherwise, you can choose yes or no. Next, do you have a address proof of your business? Can be rent agreement, or if the property or the business premises is owned by you or your relative, then you can add index 2 of property tax or receipt like that. If it is on rent basis, you can add a rent agreement. Do you have a necessary registration, licenses, permissions that are applicable to your business? Now, such licenses we have seen in that presentation, such as the Shop Act, FSSI, transport license for a particular transport businesses. If we have, we can say yes. If our business is not such like food or something like that, you can say no. Or if it is not applicable to your business, you can say not applicable or required to my business. Do you have your business formation documents such as a partnership deed, certificate of incorporation, or MOA? At present, if we see, we have this proprietorship concern. So we will not use this. The answer is I have a proprietorship concern. We will not answer this question yes or no. Do you have a Udyam registration? Yes, I do have a Udyam registration. Do you have a GST registration if applicable to your business? You can say yes, no, or if it is not applicable to your business, you can not click on that. Do you have a bank account? If you have a bank account, click yes. Did you file the ITR for your business for the previous year? If it is, we have not filed our RTR, you can say no. Do you have the financial statements of your business for the last financial year? Now, for financial statements means what? Let's say these are the like balance sheet, profit and loss account. If you do have such statements, you can say yes. If you don't have, say no. And if your business is in existence for less than 6 months, then you can click on this option also. Creditworthiness. So, did you take any secured, unsecured loan in the past and paid or paying it back on time? If it is there, you can say yes. Do you repay existing loan regularly? You can say yes or no. Or if you don't have loans, you can choose option. I have not taken any loans. Are the loans where you have given a guarantee regularly repaid? In this particular case, I'm not a guarantor for any loan, so we can choose this option. Do you regularly pay credit card bills? For this particular example, I don't use credit card. In the last 6 months, did you apply for a loan and was the loan approved?
If it is approved, then say yes. I have not applied for any loans, then you can choose this option. And if it is not approved, then you can choose no. Can you raise margin money? Presentation में हमने देखा था margin money means क्या होता है. Then can you provide a guarantors for the loan? Yes. Can you provide a collateral security? No, I can't provide collateral security. Do you have a sufficient cash to settle day to day and long-term payments like salary, rent, EMI, etc.? We can say if we have, yes, or if we don't have, say no. Now, digitization. In this, there are only two questions. First is what? Do you use digital payment modes like internet banking and UPI? Yes. Now, the second question is, do you use any app, software, or Excel sheet to record your business transactions? So in first option, we are asking about the payment mode. Second option, we are asking about recording and maintaining those transactions. So if you are using an Excel sheet, you can say yes. If you are using any app or software like Tally or something like that, then you can choose option yes. Let's click on done. You have to confirm all your responses. After that, you have to write your name, your phone number, your email address. प्रकाश ऐकू नाही येते. Am I audible? Hello, am I audible now? Yeah. Okay. So at the end, you have to click submit. Then you have to wait for it. Okay. Once you submit this, you will land on this particular page where you will see this message. Congratulations, we have sent you the funding readiness assessment report and thank you for your interest. You have to check your email and you have received funding readiness assessment report. Read this report, and if you have any doubts and anything, you can opt for the expert consultancy service on our web portal also. Now I will stop sharing this screen and let's open for the question answer session. Ma'am, there is one question. I'll just answer that. It's not a question. It's actually Mr. Ansari told me to share this link at your email ID. Which link you are asking about, sir? Yes, he left. So, आपके कोई questions है? Are there any questions you can ask? Or you can yes, sir. Please go ahead. Sir, there is a project report in banking document, is there, no? Yes. Yeah. How can we design a project report and which are the main key points should be there in the project report? Okay. Ma'am, could you please? Ma'am, you are on mute. Basically, in this project report, initially there has to be a executive summary. You know, whatever your business is, you need to
have the summary of your business. What are your products or your services? How you are going to market it? Which is your customer segment? How you are going to distribute it? What is the cost structure which is involved in it? And what are your revenue streams? And how you are going to repay whatever the amount you are going to take from the bank. So that comes in the projections. Thank you, madam. Okay. Hello. Yes. Yeah. Can I speak to Mr. Prakash? Hello. Prakash sir is there? Yeah, he's Prakash, there. your voice. So I'm not able to hear your voice, Prakash. Hello. Yeah. Yes, sir. Um, Go ahead. Yeah, Prakash sir, actually 4 days or 5 days back, there was a session conducted on trademark. On trademark. Yeah, trademark. Okay. So actually, unfortunately, I could not able to attend that session. Can I get that link through my mail? Yes, definitely. I will check that and I will get back to you on the same. Yes, sir. Please, sir. It's very essential. Yeah. Please do that. Sir, I just want to ask one thing. You are from Desh Foundation, right? Means you have been referred from Desh Foundation. Yes, sir. I remember. Okay, so I have your details. So I will check and I'll let you know about it. Please, sir. And my email ID is vdcrown@gmail.com. Yes, we do have your details. Definitely. Yes, sir. Thank you, sir. Yeah, Uh, Rahul. Margin money baddal kai, what information you need? Could you unmute and talk to me? हॅलो. Yes, Rahul. राहुल वाकडे बोलतोय. बोल. मार्जिन मनी म्हणजे मार्जिन मनीसाठी काही हेल्प मिळेल का आपल्या संस्थेकडून, तर विचारायचं होतं प्रश्न. मार्जिन मनी ही आपलीच कॉन्ट्रीब्युशन असते. त्याच्यामुळे मार्जिन मनीसाठी तुमच्या काय फ्रेंड्स रिलेटिव्ह त्यांच्याकडूनच मिळालं तर, पण अदरवाईज मार्जिन मनीला परत लोन नसतं. राहुलजी, तुम्ही फक्त एक करू शकता, जर काही स्कीम पर्टिक्युलर एखादी तुमच्या पर्टिक्युलर जिल्ह्यामध्ये किंवा तिथे जर असेल की ज्याच्यात मार्जिन मनीचं प्रमाण कमी असेल, तर ते सुद्धा विचारात घेऊ शकता. आपण जसं मागे एकदा बोललो होतो, आय रिमेंबर दॅट, तर बँकेत सुद्धा तुम्ही विचारू शकताय. जर एखादी स्कीम वगैरे अशी असेल तर डेफिनेटली त्या ह्याच्यात तुम्हाला कमी, पण तुम्हाला स्वतःच मार्जिन मनी मॅमने सांगितल्याप्रमाणे करावं लागतं. ठीक आहे सर. थँक्यू. ओके, थैंक यू. सो और अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है देन वी आर गुड. और हम आप सभी पार्टिसिपेंट्स को धन्यवाद देना चाहते हैं. आपने यहाँ पे अटेंड किया ये सेशन. साथ साथ में मैं डॉक्टर ज्योति गोखले मैम को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने इतने समय में हमें पूरा का पूरा जो बिजनेस लोन रेडीनेस प्रोग्राम है वो एक्सप्लेन किया. और उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत सारे लोग हमें ओवर द फोन, ओवर द हमारे जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स है उसके थ्रू पूछते रहते हैं. तो काफ़ी इसमें आप लोगों को भी इसके आंसर्स मिल चुके होंगे. सो इसी तरह से हमारे क्वेश्चन, हमारे जो प्रोग्राम्स है वो शेड्यूल होते रहते हैं. आप हमारे जो फेसबुक और सोशल मीडिया हैंडल्स है उसे लाइक कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहेंगे. और आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो. आपको अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस या पर्टिकुलर इसमें गाइडेंस चाहिए तो उसमें आप वेबसाइट पे विजिट करोगे. उसका डिटेल जो है दैट इज www.deasra.in. इसमें अगर आप देखोगे तो आपको सर्विसेज और डिटेल्स भी मिल जाएंगे. ओके, थैंक यू. और आपको नेक्स्ट सेशन में हम जरूर मिलेंगे. यस, थैंक यू ऑल. Thank you. Best wishes.